अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। इस चरण में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 115 निर्वाचन क्षेत्रों में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में गुजरात की सभी 26 सीटों, केरल में सभी 20, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 14-14, उत्तर प्रदेश में 10, छत्तीसगढ़ में 7, ओडिशा में 6, बिहार और पश्चिम बंगाल में 5-5, असम में 4, गोवा में 2 और जम्मू कश्मीर, दमन दीव तथा दादरा और नगर हवेली में 1-1 सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा के साथ साथ ओडिशा विधानसभा की 42 सीटों के लिए भी इसी चरण में वोट डाले जाएंगे। इस चरण में पर्चे भरने की अंतिम तारीख 4 अप्रैल है। पर्चों की जांच अगले दिन होगी और उम्मीदवार 8 अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे। इस बीच लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 91 निर्वाचन क्षेत्रों में 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए पर्चों की जांच कल की गई। इस चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 97 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। वोट 18 अप्रैल को पड़ेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय बैठक हुई। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये बैठक संचालन समूह ने ऊपरी असम में आयोजित की थी और इसमें सेना, केंद्रीय सशस्त्र बल और तीनों राज्यों के प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में बिना किसी अप्रिय घटना के स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने की तैयारियों पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील मुद्दों तथा क्षेत्र में कार्यरत सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। गोवा में दीपक पाउस्कर को कल रात कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने उन्हें राजभवन में शपथ दिलाई। श्री पाउस्कर को उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्रवादी गोमांतक के नेता सुदीन धाविलकर की जगह मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। श्री धाविलकर को कल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंत्रिमंडल से हटा दिया था। महाराष्ट्रवादी पार्टी के 3 विधायकों में से 2 मनोहर अजगांवकर और श्री पाउस्कर ने अपनी पार्टी के विधायक दल का भाजपा में विलय कर दिया। इस विलय से 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या 12 से बढ़कर 14 हो गई है। कांग्रेस के भी इतने ही विधायक हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि मीडिया को अपने कार्य में उच्च स्तर की निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए। कल नई दिल्ली में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे चुनाव के समय अपने विवेक से कर्तव्य निभाएं। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज के दर्पण के रूप में सेवा करते हैं और उन्हें लोगों की आवाज बनना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत में हाल में हुए बदलाव देश के आर्थिक विकास और समाज के उत्थान के लिए परिवर्तनकारी हैं। वे कल क्रोएशिया में ज़ग्रेब विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि अब नए भारत का निर्माण हो रहा है और वो ऐसा भारत है जो आकांक्षी है और विश्व स्तर पर जुड़ा है। श्री कोविंद 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में क्रोएशिया में हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव का एक मसौदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को दिया है। प्रस्ताव के इस मसौदे में पुलवामा में हुए आतंकी हमले की निंदा की गई है और कहा गया है कि अजहर को अलकायदा और इस्लामिक स्टेट को प्रतिबंधित करने वाली संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल किया जाएगा। इस सूची में नाम शामिल हो जाने के बाद अजहर मसूद की विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध लग जाएगा। उसकी सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी और उसके साथ किसी भी प्रकार के हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं हो पाएगी। ब्रिटेन के सांसद ब्रेक्जिट मुद्दे पर कोई समझौता नहीं और लेबर पार्टी के वैकल्पिक समझौते सहित किसी विकल्प पर बहुमत जुटाने में असफल रहे। ब्रिटेन की संसद यूरोपीय संघ से अलग होने के 2 बार नामंजूर हुए प्रधानमंत्री टेरेसा मे के समझौते से हटकर अन्य विकल्प तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। सांसदों ने कई विकल्पों पर मतदान किया था। सांसद विकल्पों की सूची कम करने और सोमवार को फिर मतदान करने की योजना बना रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में वेस्टइंडीज के आंद्रे रसेल के शानदार प्रदर्शन की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात कोलकाता में किंग्स 11 पंजाब को 28 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 218 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is All India Radio,
The news read by Sanjay Mattu. The notification for the third phase of Lok Sabha elections will be issued today. 115 constituencies spread over 14 states and union territories will go to the polls in this phase on the 23rd of next month. Elections will be held in all 26 seats of Gujarat, all 20 in Kerala, 14 seats each in Karnataka and Maharashtra, 10 in Uttar Pradesh, 7 in Chhattisgarh, 6 in Odisha, 5 each in Bihar and West Bengal, 4 in Assam, 2 in Goa and 1 each in Jammu and Kashmir, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli. 42 seats of the Odisha Assembly will also go to the polls in this phase. The last date for filing of nominations is the 4th of next month. Scrutiny will take place the next day, with 8th being the last day for withdrawal of candidature. Meanwhile, today is the last day for withdrawing nominations for the first phase of Lok Sabha elections. 91 constituencies across 20 states and union territories will go to the polls in the first phase on the 11th of next month. A high-level meeting to review the security situation in Assam, Nagaland and Arunachal Pradesh was held yesterday in view of the general elections. A defense release said the meeting by the operation group at Dinjan in Upper Assam was attended by senior officers of the Army, Central Armed Police Forces and representatives of civil administration from the 3 states. The meeting discussed the ongoing preparations to ensure incident-free conduct of polls. Officials analyzed the possible security sensitivities and measures to enhance synergy between security forces operating in the region. In Goa, Deepak Pauskar was sworn in as a cabinet minister last night by Governor Mridula Sinha at the Raj Bhavan in Dona Paula. Mr. Pauskar replaces Deputy Chief Minister and Maharashtravadi Gomantak Party leader Sudhin Dhavlikar in the Council of Ministers. Mr. Dhavlikar was dropped from Chief Minister Pramod Sawant's cabinet earlier yesterday. As 2 of the 3 MGP MLAs, Manohar Ajgaonkar and Mr. Pauskar, merged their party's legislative wing with the BJP, thereby isolating Dhavlikar as the lone MGP legislator in the House. In Chhattisgarh, 10 Nakshals, including 2 women, surrendered in Sukma district yesterday. The rebels turned themselves in before the police and CRPF officials at Konta police station. They are natives of Balingtong village in Konta area and were active in militia groups and DAKMS, which is a Nakshal front, the police said. President Ramnath Kovind has said the recent changes in India have been hugely transformational for the country's economic growth and upliftment of society. He was addressing students at the University of Zagreb in Croatia last evening. The president said a new India is in the making, an India that is aspirational and globally connected, that is impacting the global economy, that is willing to lead international efforts to find solutions to challenges like climate change and building a new global architecture to deal with terrorism. The United States has circulated a draft resolution to the United Nations Security Council to blacklist Masood Azhar, chief of the Pakistan-based terrorist group Jaish-e-Mohammed. The draft resolution condemns the Pulwama attack and says that Azhar will be added to the UN Al-Qaeda and Islamic State sanctions blacklist. It would subject Azhar to a global travel ban, an assets freeze and an arms embargo. The resolution is backed by France and Britain, which joined the US earlier this month in pushing for sanctions against Azhar. British MPs have failed to give an outright majority to any of the alternative Brexit options, including no deal and Labour's alternative deal. Parliament is trying to find an alternative to Prime Minister Theresa May's twice-rejected European Union exit deal. The lawmakers have voted on options that included leaving the European Union without a deal, staying in the bloc's customs union and single market, putting any exit deal to a public referendum, and cancelling Brexit if the prospect of a no-deal departure gets closed. European lawmakers have voted overwhelmingly for an EU-wide ban on single-use plastic products such as straws, cutlery and cotton buds that are clogging the world's oceans. The text had already been approved in negotiations with member states and EU officials, and it will now be rapidly approved into law. The ban comes into effect from 2021. In IPL cricket, an all-round performance from West Indian Andre Russell powered Kolkata Knight Riders to a 28-run win over Kings 11 Punjab in Kolkata last night. Put into bat, the hosts posted 218 for 4, riding on half-centuries by Nitish Rana and Robin Uthappa and Russell's blistering knock. And that is the end of this news bulletin.